चलो देखते हैं वी आर लाइव और नॉट। यो ओके, चलो स्ट्रीम चल रही है। हाँ, है ना। तो अपना चैलेंज ये है, एक कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो लेट्स सी, कोर्स ये वाला चाहिए था मुझे ना। हाँ, मैं भी नहीं, कहाँ का भी वो 42 आवर्स, ये वाला 47 आवर्स का This है। massive course will prepare you to be a full stack बस कॉपीराइट ना पड़े। वैसे इनका तो फ्री ओपन सोर्स चैनल है, इनका तो नॉन प्रॉफिट है, लोग तो मान दिक्कत नहीं देंगे, है ना। 8 से 10 घंटे की स्ट्रीम करने के लिए सोच रहा हूँ मैं, हो पाएगा कि नहीं देखता हूँ। सी 1 सेकंड ना, चेक कर लो ऑडियो आ रही कि नहीं। 8 से 10 घंटे की स्ट्रीम करने के लिए सोच रहा हूँ मैं, हो पाएगा कि नहीं देखता हूँ। सी 1 सेकंड ना, चेक कर लो ऑडियो आ रही कि नहीं। तो बढ़िया है, फिर पोस्ट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। के टेबल भी मिल जाना लोगों। जो शुरू करूंगा मैं, करना है भाई, ये फुल स्टैक डेवलपर मुझे बनना है 1 महीने के अंदर। बहुत एम्बिशियस गोल है मुझे पता है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। और मैं स्ट्रीम इसलिए कर रहा हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी ना। घर में अकेले पढ़ने से तो अच्छा है कि छोटी मोटी स्ट्रीम लगाओ, चलो कोई देखते के व्यूअर वगैरह। मैं अपना सब्सक्रिप्शन में जाके 1 मिनट का क्वालिटी लाइव है कि नहीं, लाइव में। हाँ, कोर्स आप लोग मेरे साथ कोडिंग करना चाहो तो कर सकते हो ना। नेट पे कर देते हैं। सो व्यूअर्स दिखने लगे स्ट्रीमिंग पर, कनकरेंट 1 आ चुके हैं ना। नाइस, ओके लेट्स गो। तो developer. शुरू करते It's हैं। taught by many different instructors and put together by Scrimba. Here's Per Borgen, the CEO of Scrimba, introducing the course. Hi there, and welcome to this massive full-stack developer path. अच्छा, ये कोर्स मैंने क्यों चूज करा है, पता नहीं। इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, सुनने में तो कंफर्टेबल हूँ, बोलने पर नहीं हूँ। और दूसरी बात, इनका है तो इनका अपन स्ट्रीम करने में कोई इशू नहीं रहेगा, है ना। प्री कोड कैम का अपना बढ़िया चलेगा, मस्त। पर क्या बोल रहा था, स्ट्रीम करने में कोई दिक्कत नहीं देंगे इन लोग, नहीं बोले। इन लोगों का काम ही है फ्री कोडिंग करवाना, तो इनका देख सकता हूँ मैं। और पहली बात, सब कुछ है फ्रॉम स्क्रैच, और मुझे कुछ नॉलेज है भी, तो वो काम आएगी मेरे। और जो इशू होगा अपन देखते हैं। इनकी वीडियो को जाके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। These modules that you are about to watch have helped countless students over on Scrimba.com break into the tech industry मुझे बहुत as पहले करना था, developers. 1 महीना हो My चुका है इस neat, कोर्स को। boring, theoretical way कितने knows लोगों the ने fun कंप्लीट way, कर लिया वो where you देखते build हैं। games, clone Google and Instagram, build AI investing apps, even Chrome extensions. And when I say you, I really mean you, because the only way to learn this is to type the code out yourself. Throughout this course, the teachers will throw challenges your way, actually over 500 times. And the starter code for these challenges can be found on GitHub or over on Scrimba.com in the interactive expanded version of this course. We're going to start out with the basics of HTML, CSS, JavaScript, and so forth, and then move on to the frameworks and technologies that are used in the industry, like React, Node, Next, SQL, TypeScript, testing, and even AI engineering. ओके भाई, क्या क्या बताएगा भाई, ये रिएक्ट बताएगा, नोड नया रहेगा मेरे लिए, और नेक्स्ट जेएस भी नया ही है, और एआई इंजीनियरिंग भी बताएगा। ओके, तो मतलब ये मेरा ट्रेंड स्टार्ट करवा देगा हर चीज में। तुम एक एक कदम रख लो हर जगह, तो अपना पैर गीले कर लो, है ना, आइसबर्ग में। So this really is your one-stop shop towards becoming a professional भाई full-stack developer. तुम मुझे, ये तो मैं समझ रहा हूँ, 1.5 दिन में इतना सब तो मैं पढ़ा पाऊंगा। एक दिन 23 घंटे, मतलब 2 दिन नहीं, 47 24 2 दिन का कोर्स है टोटल, 48 आवर्स का कोर्स है। देखते हैं हर चीज समझा पाओगे, हर एक चीज देखता हूँ। Now, I would love to follow you on this journey, so be मैंने sure to follow send me किया है a इसको। LinkedIn connection request so that I can cheer for you from the sidelines. With मैं that, कर चुका रहा let's पहले dive ही, in. फोन पे हूँ।
तो उसमें किया है मैंने। The French philosopher René Descartes once said three clever words: cogito, ergo sum, which translates in English to I code, therefore I am. So let us prove to ourselves that we actually do exist by coding this out in HTML. And the way we do that is actually not too different from how you would write this out in a regular text editor. As there, you would simply write out the sentence, and then if you wanted it a bit more prominent, you'd probably highlight it. Hey Siri, 25% ब्राइटनेस। फोन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा। एक सेकंड कवर और हटा देता हूँ क्योंकि ये कवर में एयर पॉकेट्स है तो उसका थर्मल इंसुलेशन टाइप हो जाता है ना, तो कवर हटा देता हूँ। फ़ोन मेरा चिल रहना चाहिए, चार्ज भी होगा तो कर देगा। अब बढ़िया है। And then click on normal text here and choose another content type. लाइटिंग का मैं सोर्स देखता हूँ ना, तो मैं इसके लिए आपको रीराइट बैक स्क्रीन ऑन करता हूँ। वेलकम। अब लाइटिंग थोड़ी बढ़िया कर दी, दोनों लाइट चला ली लेफ्ट राइट की। मेरी आंखों पे दिक्कत हो रही है, राइट वाली लाइट में हमेशा यूज करता हूँ क्योंकि। तो अपन यहाँ पर थे, वीडियो कितने FPS की है, 1080p लगा लेते हैं ना, दिक्कत ना रहे। चलो। For your text, you can see heading 1, heading 2, heading 3. Let's hover over heading 1 and then click on it, and there you can see that the text became a lot more prominent. It became a heading 1. Now, if we... यार इसका माइक अच्छा नहीं है तो बोल लेना, उसका माइक अच्छी क्वालिटी का नहीं है। पूरा मुझे 2 दिन सुनना पड़ेगा भाई। कुछ हो सकता है क्या इसके ऑडियो वगैरह का, क्योंकि स्टेबल वॉल्यूम करके देखता हूँ। We want to do this in HTML. हाँ भाई, बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, इसकी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही है? Let's see. फर्क पड़ा है। अच्छा, इसकी आवाज आ भी रही है समझो की। तो अपन यहाँ पर थे, वीडियो कितने FPS की है, 1080p लगा लेते हैं ना, दिक्कत ना रहे। चलो। For your text, you can see heading 1, heading... चलो। For your text. चलो ठीक है, चलो चल रहा है। We'd simply create an HTML file, which you can see here. It's called index.html. As that एक सेकंड, कहाँ पे बनने वाली prominent, it became a heading 1. Now, if we want to do this in HTML, we'd simply create an HTML file, which you can see here. It's called index.html, as that is a common name to give your HTML files. And here I would write I code, therefore I am. Okay. Now, if we open up a browser and point this browser to our HTML file and then run it, then we can see that the text indeed appears in the browser. However, it's pretty small, so if we wanted to turn it into a heading 1 instead, what we do is wrap the text in HTML tags. So before the text, we'll do this. 2 angle brackets with the text H1 inside of them. That's short for heading 1. And then at the very end of the text, I would do the same, H1, but since this is a closing tag and not an opening tag, I would also have to give it a slash before the text. ये सब पता है मुझे, फिर भी अपन एक बार कर लेते हैं। फोल्डर बना लेता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, Ctrl+Shift+N से नया फोल्डर बनेगा। Ctrl+Shift+N नहीं बन रहा, गेम न्यू फोल्डर। अपन इसका रख लेंगे YT कोर्स चैलेंज। 2 दिन में तो नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे को 1 वीक लगेगा, लेकिन इसको स्पीड रन करना अपन को, है ना। अपन इसके अंदर बना लेंगे न्यू, इसको अपन नहीं, इसको कर लेंगे ओपन विथ VS कोड से ओपन कोड व्यू कोड। ये सब मैंने सेटिंग वेटिंग की थी। ओपन फोल्डर
डेस्कटॉप वाटी यूट्यूब कोर्स स्टूडियोस। ओके, अब इसमें एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं HTML करके। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। अरे यार, मेरा पीसी वाला जो लैगिंग सो मच, वाई आर यू लैगिंग? फाइल बनेगी, पहली फाइल रहेगी index.html, है ना। चैट अपन AI का यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो कर दो बंद, इसको तो ऐसा। स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, इसमें चलते हैं। नहीं सर, तो ठीक है। गेमिंग पे चलते हैं, इससे अच्छा अपन टेक्स्ट चलते हैं। कस्टम अच्छा था अपना, नहीं लाइट। हाँ, कस्टम बनाते हैं। गेमिंग अच्छा था, फोटो बहुत ही ज़्यादा ब्लर कर देगा ना, कस्टम प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। राइट, कस्टम कैसे करते हैं? फोटो वाला सही लग रहा है, चलो। Now, if I rerun the code, चलो ये लिख के देखते हैं। तो H1 code, therefore I am, code therefore I am, therefore I am, code therefore I am। इसका मतलब क्या हुआ? मैं कोड करता हूँ इसलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ। ओके, अब जो करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, लाइव सर्वर ऑन हो चुका है। आई कोड देयरफॉर आई एम, ओके ओपन हो चुका है, नाइस। इतना तो आता है। लाइव सर्वर तो कर देंगे बंद। चलो। there you go. We have made our text a lot more prominent. Now, I think our website should give proper credit here, so let's write René Descartes underneath the H1. Like that. If we now rerun the code, ओके, ये कैसे टाइप करेंगे? रहने, ई को ऊपर पर कैसे लगाएंगे यार? ई के ऊपर खिड़की। हाँ, चल इतना चल जाएगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। डेस्क डेस्क लगाते हैं। आपके पास लाइव प्रीव्यू नहीं है? लाइव प्रीव्यू होगा तो शो प्रीव्यू, ये आ गया। बहुत सारे टैब हो जाते हैं स्ट्रीम वगैरह करो तो। इस वाले टैब को मैं बंद कर सकता हूँ क्योंकि मैं फोन में तो देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। you can see that the text is just normal. It's not an H1. That is because it is only the text which is within the opening H1 and closing H1 that gets formatted as a proper heading in the browser. In my view, this line right here should be a bit bigger. I want it to instead look something like this, where the name is pretty thick and big, but not as big as the heading 1. And that brings me to your first challenge. I'm going to paste it in here. So what you are going to do is try to make our web page look like the design in the provided slide. And if you are struggling to think of what kind of HTML tag you'll have to wrap this name in, well, कस्टम एप्लीकेशन नहीं चाहिए अभी, ईमेल आएगा। सॉरी, I've got a little hint for you. What comes after 1? चैलेंज बहुत इजी है। अपना H1 था, उसने बहुत जूम करा तो उसको बहुत बोल्ड दिख रहा है, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अपन 1 के बाद आता है H2 कर देंगे। मैंने गूगल पे इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, चलो। अच्छा, सही स्पेलिंग क्या है? ये रने, वो ई के ऊपर वो मात्रा टाइप लगाते नहीं बने ना, इसे मैं नाम सर्च करा उसका। रने डिस्कार्टिस,
ये आ गया, बढ़िया, H2 हो गया, तो 3 कर लो, है ना, जो भी करना H2। चलो So pause this scrim, jump into the code and try to solve this challenge फर्स्ट right now. चैलेंज And then when कंप्लीट you हो गया, return back to me, बहुत छोटा I will था, of ठीक course है। show you the solution as well. Good luck. गुड लक, थैंक यू सर। Okay, hopefully that went well. The way you'd solve this is by, instead of using the H1, using its smaller sibling, the H2 H2, like that. It has the exact same so-called syntax as the H1, so instead of a 1, you use a 2. 1 सेकंड है, और मैं इसको करता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ स्ट्रीम में आवाज रोटेट तो नहीं हो रही ना, लूप तो नहीं हो रही है यूट्यूब और मेरी। 1 सेकंड। बढ़िया है, देख लिया मैंने। चलो कंटिन्यू करता हूँ। If we now run this, there you go. We have achieved the ये design सब we मुझे want. इस चीजों का नॉलेज है ना, इन चीजों का नॉलेज है, फिर भी मैं शुरू से कर रहा हूँ कोर्स। जो भी चीज छोटी होगी दिमाग में घुस जाएगी। मेरा 1 महीने का ब्रेक हो गया, क्योंकि यूज करता हूँ तुमको। चलो इसको डाल लेना, अपना लाइव चैट ऑन। ओए 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 ओए, लाइव चैट ला भाई, से फोन स्लिप ना हो बस, तो ठीक है। चलो So great job. Let's move on. चार्जर से हटा देता हूँ फोन। Before we move on to the next challenge, there's one thing I want to make sure that you are aware of. And that is that if you have an HTML file locally on your computer and you have a browser, what you can do is simply drag and drop that file into the browser and then it'll be rendered. ओके, So नाइस that is नाइस actually ट्रिक, more or नाइस less ट्रिक। the same thing that's happening here on Scrimba, though here we have a mini browser and the text editor inside of, well, your browser, because स्क्रिम्बा यूज कर रहा है, जब मैं VS कोड यूज कर ले रहा, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। स्क्रिम्बा में उनका वेबसाइट बेस है ना, तो शायद कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह या कोर्स लेना पड़े शायद। तो VS कोड तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कह सकते हैं, सबको यूज करते हैं, और मोस्ट पॉपुलर भी हो सकता Scrimba है itself is browser ना। based. So a little bit meta, but it's तो अपन essentially ये the तो same कहते हैं, thing. हाँ Okay, now it's time for you to get some more muscle memory on how to write HTML tags and also get to know 2 new tags, because Okay. I want you to create a news article. And more specifically, this news article right here, which चलो has a title that says humans have reached Mars. It has a subheading चलो ये वाला अपन बनाते हैं। अच्छा से इंस्ट्रक्शन सुन लेते हैं, चलो इतना पता है लेकिन फिर भी सुन right लेते हैं। here and also some regular text. And the HTML tags are H1 for the title, H3 for this one. You haven't used an H3 for, but I think you know how to do it. And then there's finally a P tag for the text at the Paragraph. bottom. P is short for paragraph, and I have provided a little syntax example for you here. However, if you've understood the logic of how to write these tags by now, it shouldn't come as a surprise how you ओके, तो अपन इसका नाम पहले रिनेम कर देते हैं, एक्सरसाइज 1 है ना। एक्सरसाइज दे रहा, अपन इसको बना के चलेंगे। इसको करो ओपन विथ लाइव सर्वर, प्रीव्यू है, ये आ गया। एक्सरसाइज 1 थी, है ना। एक हेडिंग इसके ऊपर और डाल देते हैं अपन, एक्सरसाइज 1। ये अपन एक्स्ट्रा डाल रहे, एक्सरसाइज में बोला नहीं था, इसलिए हुआ, ठीक है। एक और बना लेते हैं फाइल, एक्सरसाइज 2.html। बंद कर देते हैं, क्लोज। इस पर लिख देंगे H1। यहाँ पे एक्सरसाइज 2 लिखने की जरूरत नहीं है यार, नहीं तो फिर मैं गिटहब में डालूंगा तो बढ़िया रहेगा ना। लाइन को हटा दो, ठीक है। ओके, आपने क्या बोला था लिखने के लिए? do that. The logic I have provided टेक्स्ट बताओ, for टेक्स्ट। the ह्यूमंस हैव रीच्ड मार्स, अभी रीच तो कर रहे हैं, छू के बस आए, है ना। सो H1 लगा देते हैं, रीच मार्स, ओके text at the bottom. ओके। मार्स की स्पेलिंग बड़ी होगी, मार्स। इसको जूम कर लूं क्या, आप लोगों को देखने में दिक्कत ना रहे?
बड़ी स्क्रीन में देख रहे हो ना कई लोग, छोटी स्क्रीन में देख रहे हो, कितना कर लेता हूँ या फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ, सबसे बढ़िया। चलते हैं फॉन्ट साइज 20 तो है यार, मोर देन इनफ है भाई। पीसी में देखोगे तो ठीक है, फोन वाले को मैं जितना केयर नहीं करना। H3 The Starship rocket successfully landed on the red planet this month. So, Starship rocket landed on the red planet this morning. ओके, एक चीज और कर लेता हूँ, मैं अपने फेस को ना हटा के थोड़ा साइड में ले आता हूँ जस्ट इन केस, और उसको छोटा कर देता हूँ, है ना, फाइल वगैरह देखने में किसी को इशू ना जाए। दिक्कत ना रहे ना फाइल वगैरह देखने के लिए। अब सही होगा। P करते चलो तो फाइल आफ्टर 150 days long जनवरी। आफ्टर हमेशा बड़ा होता है ना। days long running to the file from to the destination. This is the first time, and who wants a set foot on a planet other than a figure. Set foot planet. ओके, इसका पहला प्रीव्यू देख लेते हैं। बढ़िया है, ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है ना। गुड, चलो। is short for paragraph, and I have provided a little syntax example for you here. However, if you've understood the logic of how to write these tags by now, it shouldn't come as a surprise how you do that. Speedrunning a 2-day course. Okay, here is also the text so that you don't have to write all of that out. You can just copy paste it instead. So now, starting here on line 13, write मैं the टाइप कर HTML लूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना मैं वेबसाइट नहीं जाने की सोच रहा हूँ we need in order to create this news article. Okay, hopefully that went well. Let's start with the H1. I'm going to create the open and closing tag and चलो बस स्किप कर देते हैं। exact layout. Great. Rerunning the code, and there we go. We have achieved. Now you're going to learn about images, because I really think our Mars article needs an image. The way to do that is by using the img tag. So we start with our angle brackets and then write simply img inside of those. And what's unique about this tag is that you don't need a closing tag. So there is no closing img, as there is a closing h1 or closing paragraph. This is simply not needed. So it's often called a self-closing tag. And some people use the slash at the end of the opening tag like this, just to signify that it is closing itself. However, it's not really needed, so we can skip it. And I think in general that less code is better code, so I am just going to skip it. However, if you prefer to have it like this, that's totally fine as well. Okay, enough syntax. How do we get this image to work? Because right now, if we re-render this page, nothing has happened. And that is because we haven't told the image tag which image we want to render. And the way to do that is by writing src, which is short for source. And then we write equals, and then 2 quotes. Because inside of these 2 quotes, we're going to specify the image we want to render. And here on the left-hand side, you can see I have mars.jpg. It is in the same directory as our index.html file, meaning I can simply do mars.jpg, and then run the code. And there we go. We have our image. That is super cool. However, you can see that this image behaves a little bit differently from our paragraph, for example. Because whereas the paragraph take up the entire width, the image just take up whatever width it needs, leaving us with concept क्या था, मुझे रिवाइज करना दो। Inline versus block element,
ठीक है, पैराग्राफ इज अ ब्लॉक एलिमेंट, इमेज इज अ इनलाइन एलिमेंट, याद आ रहा है, पूरा नहीं बोलता मैं, white रिवाइज space करता on the हूँ। right hand side if the browser is too wide, or cutting off the image if the browser is too narrow. And narrow. I actually want this image to behave like our other paragraphs. So I'm going to show you a little hack to do that. Because normally you'd use CSS for doing this, but there is a little trick we can use by simply Inline utilizing CSS the with बोलते हैं। attribute. That is an attribute, just like source is an attribute, and it uses the same syntax. We'll do with equals and then 2 100%. quotes. And then inside of the quotes, we can write, for example, 100%. Percent. Now rerun this. You can see, yes, our image is now. Okay. तो चलो अपन एक इमेज और लगा लेते हैं जी, ये ऑटोमेटिक आ गया, सरसी ऑटोमेटिक। तो एक अच्छी सी इमेज देखते हैं, मार्स की इमेज। मार्स इमेज रोवर, इंडिया का कौन सा रोवर था यार, इंडियन रोवर मार्स। अच्छा, वैसे पता है मैं खुद पढ़ता तो इतना एक्साइटेड नहीं रहता, लेकिन यूट्यूब में स्ट्रीम करो तो एक्साइटमेंट आ रही नहीं यार, कुछ कर रहे हो अच्छे से करो। इंडियन रोवर मार्स इमेज कौन सा रोवर था, चंद्रयान वगैरह था। इमेज अच्छी नहीं आई है। इसरो की वेबसाइट पे देखते हैं। इन लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। चलो ठीक है, इंद्रयान जो चंद्रयान था नहीं यार। ये है, हाँ, इमेजेस से कर लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है। इमेज सप्रेशन काम ही नहीं करता इसका। कॉपी इमेज लिंक, अब देखते हैं लगा के। आ गई। विथ लिख देंगे 100, रिपोर्ट विथ 100% कर देते हैं। ओके, व्यू पोर्ट विथ, और ये बड़ा दिक्कत है। ओके, ब्लर इमेज हो, ठीक है, गुड इनफ। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यूट्यूब अपन क्लोज कर दे धोखे से। become a full stack web developer by simply utilizing the with attribute. That is an attribute, just like source is an attribute, and it uses the same syntax. We'll do with equals and then 2 quotes, and then inside of the quotes we can write, for example, 100%. We now rerun this. You can see, yes, our image is now scaling with the size of our browser, looking super neat. Now, as I said, this is a hack. स्केलिंग के लिए अपन चेक कर लेते हैं, इसको करेंगे लाइव सर्वर पे ऑन, तो ये मतलब ब्राउज़र में जाएगा, है ना। इसको करेंगे F12, F12 होता है, और करो बंद। यहाँ पे देखते हैं, नहीं, हाँ, यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं iPhone 12 Pro। हाँ, स्केल बढ़िया हो गई। ओ भाई गॉड, मजा आ गया। लाइव प्रीव्यू ऑन, लाइव प्रीव्यू ऑन कर, इसको बंद करना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा, देखते हैं, चलो भाई। So if you show this around to people, you might get this annoying guy saying, well, actually, that's not valid HTML according to the specification. But you know what? Let's not care about that. At this point, you should not give a darn about specifications, validity, and aka correct HTML. You should instead look at yourself like a hacker who grabs whatever tool you need in order to get the job done. So now, we're going to use this, even though we know it's a hack, because later down the line, you're going to learn the proper way of doing this using CSS, the language we use for styling websites. So with that out of the way, I want to show you one more thing before I give you a challenge. Because one thing that's super cool is that you can actually borrow images from wherever you want online. So if you find an image you like, you can borrow it and use it in your project. So if we Google Mars, for example, and click on the Images tab, and then click on whatever image we think is cool, for example, this one right here, and then in this image view on the right-hand side here, you can right-click and choose Copy Image Address. Once you've copied that,
you can simply paste it into the source attribute. So I'm going to remove mars.jpg and paste in the image address, which I just copied. If we now run the code, you can see, there we go. We have borrowed this super cool image from another website online. So it's time for a challenge. What I want you to do now is add a second image to our article. I want you to find one via Google and then place it under the H1 element, but above the H3 element. ओके, इनके बीच में डालना है, टैग लगाएंगे। ओके, माउस इमेज कॉपी लिंक ना, मैं ट्राइंग टू डू अ स्पीड रन। ये हो गई, बहुत बढ़िया। मुझे पता है इसमें ये दिक्कत होती है। विथ लिख देंगे 100%। 100% ही करता है, क्या ही करना। ये ब्लर है तो ठीक है ना, किसी को देखना थोड़ी ना है। तो बन गई वेबसाइट कंप्लीट। So that बहुत इजी है वेबसाइट बनाना। हाँ 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 हाँ। Remember to use the with attribute to make the image as well. अच्छा, मेरी वेबसाइट का क्या हाल है? ओके, मॉडपैक का ही चल रहा है ना, इसको अपन सुधार देंगे। As the other elements. I'm going to leave you here with the Mars image again and wish you good luck. Go ahead and solve this challenge right now. Okay, hopefully that went well. What you need to do is write the angle brackets, img, then set the source to whatever image you found online. I'm going to reuse the one I found earlier, like that. If we're rendering this is a really... You have registered. Wide image by default. That's not what we want. We wanted to scale with our browser, so we need the with attribute. With equals 100%, like that. And now we have two super cool images in our article. Yeah. Both scaling up and down with the size of the browser. Great job. Let's move on. Lesson 4 पे आ चुके हैं। Okay, now you're going to learn about something called nesting, which is the act of nesting HTML elements inside of other HTML elements. So let me show it to you in practice. Let's say that we want to group all of these elements here together. 1 second, okay. मैं अपना स्टूडियो खोल लेता हूँ। आ गया न्यू टैब। मेरा कंटेंट, लाइव कंटेंट कहाँ दिखेगा? तो देखते हैं स्ट्रिंग और करके मुझे ना देखना है। इसमें मेरे बाल वहाँ सही आ रहे कि ये है, खुद की स्ट्रिंग खुद देखो, देखना है। इसमें मेरे बाल वहाँ सही आ रहे कि ऑर्डर तो बेकार है। What we then do is, above all of the HTML tags, write another HTML tag. And in this case, we'd use the so-called div, which is short for divider. However, I don't think that is a very good name. I would rather call this, for example, a container, though div is what it's called, so we're just going to have to stick with div is the container. इसका कोई value meaning नहीं होती है ना, just words with that. Now, in order to nest elements inside of this div, we'd write the closing tag below all of the HTML tags in our article. And then, for readability purposes, we'd indent all of the tags in our article. So now, our H1, image, H3, P, and image here are all children of this div tag right here. This doesn't change our layout at all. So this div tag here is invisible. However, it has now given us the ability to target the entire article just by targeting this div right here. Okay, इतना बंद करते हैं सबको। इन सबको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कैसे लेते हैं। इतनी बड़ी लिंक है, लिंक का साइज तो देखो। डिव क्या हो जाता है? कर लेंगे डिव स्टार्ट, ठीक है। H1 से पूरा कट कॉपी कर लेंगे, कर देंगे अंदर कॉपी, और इस पूरे को इंडेंट करना हैगा 4 स्पेसेस, मतलब एक टैब।
थोड़ा सी इंडेंट ठीक है, ज़्यादा इंडेंटेशन कर दी इसमें लेके। इंडेंट हटाते कैसे होंगे? हाँ, शिफ्ट टैब से होता है इंडेंटेशन हटाना। ओके, बन गया। अच्छा, कोई वेबसाइट में फर्क आया है? फिर भी देख लो, पता तो है नहीं, कोई फर्क नहीं आया। ह्यूमंस हैव रीच मार्क, इसमें अच्छा बड़ा ना बढ़िया एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो ये, और इमोजी चिपका दो हु वाला, सरप्राइज्ड इमोजी, स्यू और इमोजी ऊ वाला वे। कॉपी करने का ऑप्शन देगा कि नहीं देगा? नहीं कर सकते। वाह, अरे गूगल अच्छा है, अरे बिंग ना हर बार। कॉपी ओपन कर देंगे, पेस्ट, ये सही हो गया, मस्त है। चलो, And that is useful if we, for example, want to add some styling to our entire article using CSS, or somehow manipulate छोटा it बड़ा using कर रहे हैं तो JavaScript, which is the रिस्पॉन्सिव है। programming language that you use in browsers. And very often, you'll actually see a ton of divs on a page. So, for example, you'd see another div around this image element here, which then would have been indented yet another time in order to signal that this is indeed a child of this div, which again is a child element of this div. Now, if we were to visualize... ओके, नेस्टिंग में अपने मन से रिवाइज करता हूँ, ठीक है। ये मेन पेरेंट है, इसके अंदर चाइल्ड है, इसका चाइल्ड है, देखो पेरेंट, इसके अंदर का चाइल्ड ये, उसके अंदर चाइल्ड, ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। पेरेंट ये होगा, चाइल्ड ये होगा, इसके अंदर का कंटेंट है, चाइल्ड के अंदर का कोई मतलब नहीं, वो तो कंटेंट कहलाएगा। उसके अंदर 100-200 चीजें कितने भी हो ना, पेरेंट वन, मेन पेरेंट ये हो जाएगा, उसके अंदर चाइल्ड ये हो जाएगा, खत्म। an HTML document. तो अपन डिव को भी एक चाइल्ड और दे देते हैं, है ना, डिव लगा देते हैं। ये इमेज का सोर्स लिंक देख रहे हो, क्या विशाल का ही लिंक है भाई, और इमेज की क्वालिटी देखो, और जो है सो है। इसको अपन इंडेंट कर देंगे, है ना, तो इंडेंट देते हैं, इमेज टाइप आ गया। ये अपना पेरेंट है, मेन पेरेंट कहाँ क्लोजर है, मेन पेरेंट, ठीक है। उसके अंदर चाइल्ड, उसका चाइल्ड ये आ गया, चलो। It would look something like this. You'd have, for example, a div up here, and it would have two children, which could be their own divs, like this. ओके, And then this left-hand div here would, for example, have an image tag as its first child, and also an h3 as its second child. The other div on the right-hand side could have an h1 tag as its child, p tag as its child, maybe even another div as its child. Okay. And then if we go yet another level deep, this paragraph tag might have its own child, which could be, for example, an a tag, which you haven't learned about yet, but which you'll learn ओके। सो कंटेंट के अंदर के, मतलब मैंने गलती क्या कर दी, कंटेनर के अंदर ये कंटेंट को भी चाइल्ड बोलते हैं। ये कंटेनर, ठीक है, उसके दो चाइल्ड, इनके दो चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड, ठीक है। इस ये पेरेंट चाइल्ड, मतलब इसका चाइल्ड ये है, इसके 3 चाइल्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चाइल्ड। अब इनके भी चाइल्ड हो सकते हैं, ये इन्फिनाइट हो सकता है ना, फैमिली ट्री। about soon. That is the so-called anchor tag that allows you to create links on websites. And looking at this visualization, you might think, well, this kind of looks like a family tree. And yes, Family it tree, does. And yeah. that is exactly why we call this structure the HTML document tree, because we are inside of an HTML document, and how they are nested inside of each other becomes kind of like a tree, where you have a trunk and then branches going out from that, and then yet again new branches going इसकी एनालॉजी अच्छी है, ट्रंक और ब्रांचेस, उनके अंदर लीव्स, उनके अंदर ब्रांचेस, पर जो इनफाइनाइट हो सकता है ना। out from those branches, and so on and so on. So now that you know that, let's move on to the next scrim. Okay, now स्क्रिम मतलब, ओ माय गॉड, पानी लग गया मुझे।
Now we're going to use your newly acquired internet superpowers in order to perform a little practical joke. Because you might have a friend who is far too obsessed with a sports team. For example, I myself am a Manchester United fan, and one of the worst things... मैं कोई स्पोर्ट्स टीम तो नहीं जानता, मैंने फनाटिक की वैलोरेंट की स्किल ली थी, तो उसको मान लेता हूँ मेरी स्पोर्ट्स टीम है, हटाओ, ई स्पोर्ट्स टीम है, वो स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स से ज्यादा फर्क नहीं है. I can imagine is if some rich billionaire buys the club and changes its अब जैसे मैं मुकेश अंबानी का बच्चा होता तो मैं फनाटिक को खरीद लेता पूरी की पूरी. That would make me truly outrageous. So what we're going to do now is change the news on BBC Sports so that you then can show this page to a Man United fan and thus make them really upset while you get a good laugh. So let's go ahead and do this. Here on the BBC Sports page, on this top article here, I'm going to right click on the text. And then you can see it gives me the option to choose inspect. Now, note that this is on a Chrome browser, as that is what I'm using. If you're in a different browser, there might be slightly different steps here or a different wording. But overall, in general, the steps are the same. So I'm going to click on it. Chrome browser पे आ जाते हैं ना. Chrome है मेरे पास. क्योंकि Chrome में अपन राइट टैप करके ना वेबसाइट को चला भी सकते हैं, रेंडर भी. तो क्रोम खोल लेता हूँ. क्रोम मेरा पहले है इससे, वो डेवलपमेंट के लिए मैं क्रोम ही यूज करता हूँ, लेकिन मेरे को एज का क्या बोलते हैं ना, थोड़ी सी आदत लग गई है ना, तो नॉर्मल कामों के लिए मैं एज यूज करता हूँ. आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं. This is Akshay from Mumbai. He wants to start selling online. पहले ही है, इसलिए मैं क्रोम यूज नहीं करता हूँ. इसलिए मैं क्रोम यूज नहीं करता हूँ. ऐड आते हैं. Akshay from Delhi wants it. Where the name is... क्रोम ने खुद ही प्रूफ कर दिया भाई मैं कितना बेकार ब्राउजर हूँ. एक सेकंड टाइम स्टैम्प ले लेता हूँ. कितना टाइम स्टैम्प था अपना, या भाई मैं कितना बेकार ब्राउजर हूँ. तो चैनल डैशबोर्ड ये वाला On this top article 1531 पे, इसको भी कॉपी कर लो. सब कुछ क्रोम में ओपन करके बैठता हूँ. और एज मालूम क्या करता है, टैब की अगर नई नई विंडो बना देता है हर एक टैब की. तो अपनी ये खोल लो पहले. ठीक है, करता है टैब की अगर नई नई विंडो बना देता है हर एक टैब की. तो अपनी ये लेते हैं और 1531. बाप रे, 1 घंटा कितना छोटा है. and thus make them read on the text. And then you can see it gives me the option to choose inspect. Now, note that this is on a Chrome browser, as that is what I'm using. If you're in a different browser, there might be slightly different steps here or a different wording. But overall, in general, the steps are the same. So मैं ढंग से बोल नहीं पाता, खुद की आवाज सुनकर बहुत बेकार लगता है. बच्चों जैसी आवाज है. ये खोल लो पहले. ये फोन वाइब्रेट किया है मेरा, सॉरी. Click on inspect, and then you can see that it opens up this panel on the bottom of the browser. This is called the developer tools. And here you can see we are in the elements tab, and that shows us the HTML elements that are on the page. And here, the one we have chosen now, which happens to light up this area on the BBC site, contains the title of our article. And it is an A tag, which I've just briefly mentioned and that you're going to learn more about later. Now, we can't see any text here, so I'm going to click on this H tag, and there you can see it contains an H3 tag nested inside of it. If we click on that one as well, you can see that there we see the text that is rendered in the browser. So here we can double click on that text and change it, for example, to something as awful as Jeff Bezos to buy Man United and rename the club after himself. Oh, ओ भाई, ये डबल क्लिक ट्रिक मुझे नहीं पता था. चलते अपन bbc.com/ तो इन लोगों को पैसा आना है यार आज के टाइम. इसी को ले लेते हैं. इस वाले आर्टिकल को खोलते हैं. क्या था, कैसे करते हैं इंस्पेक्ट, देंगे स्पॉन्सर. रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर देते हैं, 1450 by 900. इसमें दबा देते हैं, अंदर आएगी. हाँ, इससे अपन कर देते हैं चेंज ना. मैं फुल स्क्रीन आ गया. चेंज कर लिया मैंने जस्ट इन केस.
तो बनने लगा। ओके गाइस, को आगे बढ़ते हैं। Oh my god, that is about the worst piece of news any United fan can read. So if we now hit enter, there you can see, boom, we have changed the text on BBC. Now, let's click on this paragraph here as well, open it up, because there we can also change the text that is written underneath the title. Let's paste in, the US billionaire says he doesn't follow the Premier League, but wants to own the club to grow his personal brand. Oh, this just gets worse and worse. So now if we hit enter, that is also rendered in the browser. Now I'm going to scroll a little bit up in the DevTools here and hover over this div tag here, because as you can see, that highlights our image. So it seems to be that our image is nested inside of a div tag. Let's open it up by clicking on this triangle. And there we can see another div tag. Well, okay, still highlighting the image. Let's open up that one as well. Oh, wow. There we have yet another div tag, a div inside of a div inside of a div. This is web development in a nutshell. Let's open it up again, and there, yes, we can see our image tag. I'll scroll a bit down, and you can see there are tons of different attributes here. We're going to ignore almost all of these, and then instead direct our attention towards the SRC attribute. That one we know, because that is the one we need to change in order to change this image. So now let's open up a new window, search for Jeff Bezos, click on an image we like, for example this one right here, right click on it and choose copy image address. चलो चलते हैं, इसकी अपन फोटो बदल देंगे। हाँ जा पहले ऐड आ जाए ना, एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें इमेज सर्च करना है। अच्छा, ये रिएक्ट से बना से इतना अजीबोगरीब चल रहा है ना। जस्ट कोई भी इमेज टैग देखते हैं। IMG जे अपन इसका बदल लेते हैं ना। देखते हैं कोई मिलेगी। इसका कॉपी इमेज एड्रेस ना, दिमाग नहीं खराब करना। इससे करो बंद। ओके 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 भाई, समझ गया। फिर क्या हो रहा है? एडिट क्यों नहीं कर पा रहा? मैं कोई अलग मोड में हूँ। इसको हटाइए, लगा देते हैं, देखते हैं। हाँ, ये गूगल की फोटो ठीक है, ये बनने लगा जी। अच्छा, फन चीज बताई उनने। चलो आगे बढ़ते हैं, खुद की स्ट्रीम चलने दो। ना कर देते हैं पिन, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऐसे आगे चलते हैं। Then can do now is double click on this source and then remove the existing source inside of the quotes like that, and then paste in our image of Jeff Bezos. However, if we now hit enter, you can see nothing changed, and that is because BBC is a little bit fancy here. They use another attribute called SRC set, which helps the browser render different sized images on different types of screens, depending on what kind of image is appropriate for भाई ये नई चीजें बता रहे हैं। इंडियन कोर्स थोड़ा इनका कोर्स देखो, बढ़िया बता रहे हैं। Screen the website is rendered on. So what we're going to do here is just double click on the SRC set so that everything's highlighted, and just delete all of it and then hit enter. And boom, there you go. We have Jeff Bezos looking pretty ready to acquire this football club and rename it Bezos United. Finally, I'm going to close this panel by clicking on the X in the right corner here, and there you go. We have our article. So now the final step is just to take this site
show it to someone who is a Manchester United fan, and get a good laugh. Now, a final notice, if you refresh this page, you will lose your changes because you only made your changes locally, and when you refresh it, the entire page gets the fresh data from the database of BBC and not from whatever. व्यूअर जो वीडियो देख रहा है ये बता, अगर आप फोन पे देख रहे हो तो मैं इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर दूँ, अगर पीसी या लैपटॉप में देख रहे हो तो कोई इशू होगा नहीं। फोन पे कैसा व्यू आ रहा है, क्योंकि मेरे फोन में तो बहुत छोटा है, local changes खुद दिख you नहीं did. रहा है। And since it is local, that also of course implies that your changes ये only फीडबैक दे दो भाई। happen on your computer. You don't change BBC in production, of course. So go ahead and play around with some sites online. See if you can come up with a fun little practical joke for a friend. Have fun, and I'll see you in the next script. ओके, एक जोक बनाना ना। ओके चलो, गूगल ही का अपने लोगो बदल देते हैं, रिस्पेक्ट करेंगे। एलिमेंट में आ गए लोगो के, एलिमेंट पिकर, ये बताओ। अबे वो है कि नहीं लोगो? अच्छा ये डिव है ना, इसके अंदर ये है। तो अपन सर्च करते हैं IMG टैग यूज करते हो कि नहीं गूगल? ये है, कौन सी लिए हो? इसको बदल कर देखते हैं। अच्छा ये वाली है, तो ये क्या यूज कर रहा है गूगल? गूगल स्मार्ट है भाई, वैसे बताएं। इस पे आइटम पिकर से करते हैं, उसको बताओ डिव लोगो रोल। ये डिव के अंदर ना, डिव के अंदर कछु है ही नहीं, लेकिन ये होगा, ये फ्रेम होगा। ओके मिल गई। अपन चलते हैं याहू लोगो, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। न्यू टैब है तो ना, इसको अपन बदल देते हैं, देखते करेगा कि नहीं, मुझे पता नहीं है। नहीं बदल, कॉपी इमेज एड्रेस। अच्छा डिव, एक्चुअली वो इमेज कुछ और है। नहीं, रिफ्रेश कर लो पहले पेज, सब कुछ पहले ऐसे होता है। ये क्या है? ओके ये फ्रेम है, पूरा आई फ्रेम है यार। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। इसको इमेज सर्च बॉक्स कंटेनर फ्लेक्स बॉक्स है ये ना, इसको खोलो जरा। इसके अंदर कोई इमेज है? ये बहुत सारे टैग्स है ना, सर्च बॉक्स। इसको छोड़, BBC को ही सुधारते हैं। स्पोर्ट रिस्पेक्ट करके स्पोर्ट की जगह बंद कर देते हैं ये तो टेक्स्ट है लग रहा। ओके इसको बदलते हैं, इसको मैंने बदल चुका था क्योंकि स्पैन के अंदर स्पैन है। हाँ ये पिक्चर है तो ये हाँ जे बदल गया फोटो चेंज कर दी वो है ना। ओके बैज मिल गया वो भाई, देखो फोटो चेंज करके देखा की लगा बैज मिल गया भाई। गूगल भी देखो रेसिस्ट है, ऐसी बात नहीं है। यू अर्न द क्रोम डेव टूल यूजर बैज फॉर गूगल डेवलपर प्रोग्राम, क्रिएट अ प्रोफाइल टू क्लेम योर जो केले उसको क्या से क्या कर दिया भाई। देखो ये इमेज अभी मैंने चेंज करी, ये कौन सी थी इसको फिर से करके देख लेते हैं ना एक बार, मजा आया मजा आया।
इसको मैंने ब्लैक इंसान आ दिया। स्पैन के अंदर स्पैन खोलो, उसके अंदर स्पैन है, उसके अंदर पिक्चर है, उसके अंदर है उसका SRC। इसको बदल लेना पूरा। रुको, मजा आता है ऐसा कोर्स यूट्यूब। अबे यार, अच्छा इसको बदलना पड़ेगा। ये क्या इशू, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसको बड़ा करना पड़ेगा। सी, हाँ बटेगा। ठीक है ना भाई। हाँ अच्छा, हाँ इसको डबल क्लिक करना पड़ता है। ओके, इसको अपन बदल देंगे तो ये हो जाएगा। नाइस। नीचे थोड़ा, चलो ये होगा, अब आगे बढ़ते हैं। Spotlight shine bright all on me. Got the internet turning like who is Join the Now we're going to get you onboarded to the Scrimba community करना because पड़ेगा। this career path is so much more than just a course. It's also a social experience where you are able to get help, meet like-minded people, network, and find inspiration. Our Discord server is at the heart of our community, and thousands of coding students just like you are online at any given time. We pride ourselves on keeping our Discord an ultra supportive and friendly space, and we welcome coders of all abilities, from complete beginner to professional. And we have a ton of channels for all kinds of coding and work-related subjects. So in a moment, click on this link, this screenshot, or any of the screenshots you see in this scrim. And that's right, remember, a scrim is not a video, so the link that you can see right here, that is a live link, you can click it. This is going to take you through to Discord, and you can just follow the steps to get registered and onboarded into our Discord server. And that will no doubt involve proving that you're human by identifying elks or something. Once you're done, why not make your first stop on our Discord server, the Introduce Yourself channel. Let us know who you are, where you're from, what your aims are, what you like to do when you're not coding. This is your first opportunity to interact with the Let's join the community. Okay, Discord. Login. कम्युनिटी को करना है ज्वाइन। पहले मैं देख लो। ओके, ये इशू है ना, एज पे सेव आईडी एज करते हैं। खाना बढ़िया .com। हेलो, फ्रॉम इंडिया। ओके, लेट्स कस्टमाइज। रुको, दोनों कर लेते हैं, क्या जा रहा है। फाइंड, तीनों ही काम में आए ना अपने लिए। पढ़ना चाहिए, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, नो हरेसमेंट, वॉचिंग, हंटिंग, सेक्सुअल रेसिज्म। ओके, नो स्पैम। ओके, नो सेक्सुअल कंटेंट। इफ यू सी समथिंग अगेंस्ट द रूल्स यू मस्ट नो। ओके, बताना पड़ेगा, चुगली करनी। Introduce yourself. Get started. Okay, watch the introduction video. Okay, let's introduce ourselves. Okay. Hi, Gautam, familiar. कितना अच्छा उसने डाला। Yeah. Looking everyone. Gautam, familiar. Okay. Cool. तो बॉट बॉट करता है यार, बट इसको मैं इंसान हूं तो वेट कर दूंगा, वेट कर दूंगा।
ओके, अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल जाती है। अपन ने ये तो कर दिया। अब इस लिंक को करते हैं क्लोज, करते हैं वापस community. वीडियो And पे। then why not browse the channels? And I'm just going to point out a few highlights. We have थोड़ा सा प्रमोशन कर रहे हैं सब, अच्छी बात है। अपन ने इतनी मेहनत करके कोर्स बनाया है। इंडिया में तो ये कोर्स पैसे लगते बहुत ज़्यादा। the announcements channel for news and updates. There's a stay accountable section with Today I Will and Today I Did. These channels can help you set goals and brag about your success. Yeah. Career Chat, as the name suggests, is where you can get and give help. ओके 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 ओके, अपन ने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कर दिया। टुडे आई विल स्टार्ट। ओके, आई विल स्टार्ट दिस कोर्स, watch at least 3 hours. Yes. Good. अब क्या करना था? Help on career related matters. The I Built This channel is a great place to show off the amazing projects you've been building. And if we just scroll down a little bit more, we can see that we've got the general help channels here for JavaScript, design, HTML, React. And then here we've got specific channels for each module of this career path. So you can always go there if you get stuck and you need a bit of help, or if you want to pay it forward and help out some other students. Now, if we go right back up to the top, we have events, and this will show you up and coming events for the Scrimba community. Every Tuesday, we host the Scrimba Town Hall on Discord. And टाउन हॉल क्या है? अच्छा, यहाँ पे बोल सकते हैं। अच्छी कम्युनिटी है। अब मैं बी राइट बैक होता हूँ, खाना वाना खा के आता हूँ, ठीक है? स्ट्रीम चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी